हेलो फ्रेंड्स, आज वापस मिलते हैं 12th स्टैंडर्ड के लिए। 12th स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। ओके, तो अभी इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या है स्ट्रेट अवे देखते हो। व्हाट आर इम्प्लिसिट फंक्शंस? तो इम्प्लिसिट फंक्शंस मीन्स व्हाट विल सी। आई हैव टेकन टू एग्जांपल्स। राइट साइड को द एग्जांपल दैट यू कैन सी ओवर हियर, y is equal to root of cos x plus root of cos x plus root of cos x to infinity. Left hand side you have y, right hand side you have x. Okay, so y is expressed purely in terms of x. Left hand side में purely y, right hand side ला purely x आहे. याचा अर्थ काय झाला? मध्ये मध्ये मराठीतनं पण बोलायला हरकत नाही. याचा अर्थ असा झाला की y आणि x, y is purely a function of x. This function is not implicit. The problems that we have seen up till now had got y on the left hand side. So derivative of y dy by dx. Up till now we have seen. Now one function I have taken, one problem. Cos inverse of all this is equal to tan inverse A. Now see the difference between this and this. This equation is not of the form y equal to something. X and y का combination है, यहाँ पे constant है. So it is difficult for us to separate out y. ऊपर y, नीचे y. It is not expressed y equal to something. Such functions are called implicit functions. This function is called as an explicit function. Explicit यानी pure. Y purely in terms of x. Implicit means combination of x and y. Followed? Okay. तो इसका डेरिवेटिव कैसे? इसका डेरिवेटिव you always get dy by dx on the left hand side. But over here, what we are going to do is, first of all, remove cos inverse from the left hand side. So cos inverse, when we remove from the left hand side, it goes on the right hand side as cos. Clear? Cos inverse goes as cos. You can see here. If I take cos inverse on the right hand side, it goes as cos. So cos of tan inverse A, ऐसा आ गया. So I just want x and y on the left hand side. y तो मिल नहीं सका, ठीक है, x and y मिला है ना, ठीक है. Now cos of tan inverse A, दोस्तों, tan inverse A is a constant. So cos of tan inverse A is also a constant which we are going to call as k. A constant है, therefore tan inverse A is constant. Therefore cos of tan inverse A is also constant which you can call as k. Clear? Right? So it is a constant. Okay. Now what? अभी क्या करना है? ये जो denominator है, just cross multiply over here. This denominator यहाँ पे shift करो. It goes as numerator. Clear? After doing that, open up the brackets. Left hand side remains as it is. Right hand side, 7k x raised to 4 minus 5k y raised to 4. k से brackets open up किया, that's all. Anytime if you want to see the step once more, you can just pause the video. थोड़ा back जाके वापस देखो. लेकिन आसान है. Cross multiply किया, brackets open up किया, I get all this. Now after I get all this, one important thing has to be done for implicit functions. Y should be taken on the left hand side. Y raised to 4 है ना? Take y raised to 4 on the left hand side. So this becomes plus. Minus 5k y raised to 4 becomes plus 5k. 5 y raised to 4 is already there. उसको कुछ किया नहीं है. y का टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में, x का टर्म्स राइट हैंड साइड में. 7x raised to 4, take it on the RHS, it becomes minus 7x raised to 4. Clear? Huh? So as we do for any equation, keep y on one side, x on the other side. So y raised to 4, I have taken common now.
5 plus 5k, x raised to 4 is common, 7k minus 7, 7k minus 7. So what do you get now? Now what I'm doing is 5 plus 5k, bring it in the denominator. Okay, so y raised to 4 remains over here. Multiplication gets converted into division. 7k minus 7 upon 5k plus 5, इसके नीचे ये आ गया x raised to 4. I'm trying to make things simpler before differentiating. Okay, so y raised to 4 on the left hand side, x raised to 4 on the right hand side, right? तो अभी this function has got converted into an explicit function. Explicit है ना this type. Y is on the left hand side और y raised to 4 is on the left hand side, x raised to 4 is on the right hand side. तो explicit में अभी convert हो गया. समझे implicit और explicit का difference? Now 7k minus 7 upon 5k plus 5, k is a constant we have said over here. So this becomes a new constant. स्माइली का फंडा आ गया वापस. 7k minus 7 upon 5k plus 5, नया constant, उसको c बोलो. Call this as c. Okay, this entire thing is a constant. तो सब क्यों लिखना है? Just call it as c. So y raised to 4 is equal to c x raised to 4. This is our main equation of explicit function. अभी explicit में convert हो गया है. समझे एक्सप्लिसिट में कैसे कन्वर्ट किया है? ओके, y purely in terms of x. Now our usual step, differentiate with respect to x. d by dx of y raised to 4, our basic rule, constant बाजू को रखो, d by dx of x raised to 4. Let's go ahead. Derivative of y raised to 4, 4 सामने आया, y cube into derivative of y also. Don't just write 4y cube. डेरिवेटिव ऑफ y भी लिखना है, dy by dx. c कांस्टेंट बाजू को रखो, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 4, 4 सामने आया, 4x क्यूब. क्लियर? 4 4 कैंसिल हो गया बिकॉज मल्टीप्लिकेशन साइन इज देयर, इक्वल टू साइन इज देयर, कैंसिल, गेट रिड ऑफ 4. सो कीप dy by dx ऑन लेफ्ट हैंड साइड नाउ. समझे? तो डेरिवेटिव लेने के बाद 4 4 कैंसिल हो गया. dy by dx क्यों आ गया यहाँ पे? बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ y भी लेना है बाद में दोस्तों. डोंट फॉरगेट विथ रिस्पेक्ट टू x. सो dy by dx इज इक्वल टू c इंटू what remains, x cube upon y cube. That's all. x cube upon y cube. और c सामने है. हाँ, तो c सामने से निकालना है. स्माइली का फंडा आ गया. स्माइली बोल रहा है सब्स्टिट्यूट करो, लेकिन कहां से करोगे? सब्स्टिट्यूट क्या करो? गेट, when you want to get rid of c, you have to substitute for c. लेकिन from where? Go back to equation 1. What is the value of c from equation 1? See here. Value of c, y raised to 4 upon x raised to 4 equal to c. c right hand side में. This is the value of c which I have written from equation 1. Now last step, just put this value of c over here. So dy by dx is equal to y raised to 4 upon x raised to 4 into x cube upon y cube. Simple. y raised to 4 y cube goes, एक y ऊपर रह गया, x cube goes, एक x नीचे रह गया. dy by dx is equal to y upon x is the answer. Okay. Practice this sum 2-3 times. Sometimes you have tan inverse, it goes as tan. Sometimes you have sin inverse, it goes as sin. ऐसे ट्रांसफर करना है. कभी कभी log भी आता है, तो log को क्या करना है? You have to take the base e and then remove log. Simple. So this sum was for explicit function. Now let us take one CET problem. ये टेक्स्ट में implicit function के एक्सरसाइज में ही है, but actually this is an explicit because y is expressed purely in terms of x. Wherever it is present in exercise, अपने को क्या करना है? We just have to solve it. That's all. Okay, so let us solve. लेकिन I am not going to take d by dx over here directly. Okay, मैं पहले ये रूट साइन रिमूव करने वाला हूँ, बाहर का रूट्स, बिकॉज इफ आई डायरेक्टली टेक d by dx बाद में बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. d by dx ऑफ ऑल दोज रूट्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड है बाबा, कौन करेगा सॉल्व? सो गेट रीड ऑफ दिस रूट फर्स्ट, बाहर का रूट. To get rid of that root,
स्क्वायर बोथ साइड्स, हिंट में लिखा है स्क्वायर बोथ साइड्स टू गेट y squared is equal to cos x plus y. Okay, now in certain sums I am going to give you a hint which you have to remember कि ये hint में जो लिखा है वैसे पहले स्टेप लाना है, फिर आसान हो जाएगा. तो how will I get y squared? y squared कहाँ से आ जाएगा? by squaring both sides. हाँ, अभी देखो मैं स्क्वायर करके दिखाता हूँ आपको. So स्क्वायर करो, क्या मिलता है? देखो क्या मिलता है. यहाँ पे स्क्वायर किया, यहाँ पे स्क्वायर किया, y squared मिला. इधर क्या हो गया? What happens? This root sign and this square gets cancelled. सिर्फ बाहर का रूट साइन जाता है, अंदर के रूट साइन नहीं. तो बाहर का रूट साइन जाने के बाद क्या मिला? Forget about the outside square root sign. Cos x remains plus ये सब है देखो, all this remains. Okay? और आसान करोगे प्रॉब्लम. Let's see, we'll make it more simple. All this is nothing but y. देखो, root of cos x plus root of cos x plus root of cos x to infinity, root of cos x plus root of cos x plus root of cos x to infinity, y. So if you go back to this equation, you just get y squared is equal to cos x plus y. Very simple equation. That is how we got that equation. First square both sides, get rid of the outer square sign, then call this as y. Now differentiate with respect to x. d by dx of y squared is equal to d by dx of cos x plus d by dx of y. Derivative तो मालूम है ना? We don't have to use any product rule over here. There is no product, direct rule of addition. Now derivative of y squared 2y but dy by dx. Derivative of cos x minus sin x. Derivative d by dx of y is dy by dx. Now when you get dy by dx over here, dy by dx over here, take this dy by dx on the left hand side. So 2y dy by dx minus dy by dx is equal to minus sin x. dy by dx why do we take on the left hand side? क्योंकि इसको कॉमन निकालना है दोस्तों. डायरेक्ट dy by dx कैसे मिलेगी? So dy by dx on the left hand side, take dy by dx common, 2y minus 1. देखो 2y remains here, minus 1 remains over here. आ गया आंसर. So dy by dx is equal to minus sin x upon this goes over here. यहाँ पे आता है 2y minus 1. यह पहला आंसर है. Now in the textbook they have asked to prove 1 minus 2y nature, they have not kept minus sign over here. So what do we do in that case? Just transfer the negative sign. Just transfer the minus sign. See, I'll write over here. Last step, dy by dx सिर्फ sin x लिखता हूं. माइनस साइन गोज इन द डिनोमिनेटर. यहां से यहां माइनस साइन लाए. नाउ व्हेन द माइनस साइन कम्स ओवर हियर, व्हेन यू टेक इट इनसाइड द ब्रैकेट, व्हाट हैपेंस? Minus of minus is plus 1 and minus 2y. Both the answers are correct. Okay? If it is asked to prove that this should be the answer, एक step और आगे लिखो. नहीं तो ये भी बराबर है. Right? So both are important examples of implicit and explicit functions. So ध्यान में आया सबको? Clear? और कुछ explanation की जरूरत नहीं है. That will be all for today. See you in another 2 days time. देखते हैं क्या आगे लेना है. Bye till then. और एक बार देखो, प्रैक्टिस करो जरा. Bye.